Dear students, today we are going to start the first lesson of Hornbill, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This story presents a pen portrait of his grandmother. The author was close to his grandmother since his childhood. However, a turning point came in their relationship when the narrator's parents sent for them in the city. Different subjects were taught there. He went abroad later on for higher studies. He arrived after 5 years after completing his studies, and it was a day for the celebration for her grandmother. The old lady got tired and fell ill. After a day, she died. Her death was not only mourned by her family but also by sparrows. इस लेसन में जो ऑथर ने हैं उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। ऑथर और दादी माँ दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए शहर आ गए। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो कि दादी माँ को पसंद नहीं आते थे। कुछ टाइम बाद जब ऑथर आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर जाते हैं तो 5 साल बाद की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लौटते हैं तो दादी माँ बहुत खुश होती हैं और उनके आने की खुशी में वो दिन भर गाना बजाना करती हैं। लेकिन थकावट की वजह से वो बीमार भी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि वो चिड़ियाँ जो उनके पास आकर बैठा करती थीं वो भी वहाँ मौजूद थीं, और जब उनकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा था वो भी वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। सो स्टूडेंट, द मैसेज विच वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट देयर आर फ्यू रिलेशनशिप्स for whom we are devoted and loved. So in their absence, we feel the sense of loss, same as the author is feeling about his grandmother. Thank you so much and have a nice day.